Chapter number 5, Gravitation. Let's solve some numericals on this chapter. First one says, what would be the average duration of year if the distance between sun and earth become thrice the present distance and twice the present distance? अभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें केपलर का थर्ड लॉ यूज़ करना है, दैट इज़ लॉज ऑफ पीरियड्स, जो कहता है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन रेडियस. जब कोई दो एंटिटीज एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है तो उनके रेशोज फिक्स रहते हैं, तो उनके रेशोज कांस्टेंट रहते हैं. तो हियर द रेशो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज कांस्टेंट फॉर द गिवन स्टार एंड द गिवन प्लैनेट. सो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज कांस्टेंट. दिस इज एज पर केपलर्स थर्ड लॉ. तो हमें क्या बोला गया है कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस थ्राइस हो रहा है. डिस्टेंस थ्राइस हो रहा है, इसका मतलब क्या कि ये जो आर है, R2 इज थ्राइस आर, और वी कैन से इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, हम उसको R समझे तो लेट अस से ये R1 है, तो R1 इज 3R. तो अगर R1 3R होता है तो क्या होगा, मीन्स हाउ मच विल बी T1, ऐसे पूछा गया है लेटर से. सो टी स्क्वायर, अभी वी नो द प्रेजेंट ड्यूरेशन ऑफ ईयर. व्हाट इज प्रेजेंट ड्यूरेशन ऑफ ईयर? इट इज 365 डेज. रेशो है तो फिर डेज को सेकंड में करने की ज़रूरत नहीं है, तो वी विल से 365 स्क्वायर अपॉन द प्रेजेंट जो रेडियस, इसको आर बोला हमने, अपॉन आर क्यूब हैज़ टू बी इक्वल टू T1 स्क्वायर अपॉन R1 क्यूब. रेशो कांस्टेंट है, इजंट इट? लेकिन R1 कितना है हमारा? R1 है 3R. So that will be T1 square upon 3R cube. That is T1 square upon, अभी what is the cube of 3? Cube of 3 is 27. 27 into R cube. So if you take these two ratios, then this we will get the ratio. We will get the equation 365 square upon R cube is equal to T1 square upon 27 R cube. R cube can be cancelled. You get T1 square is equal to 365 square into 27, and then you can find the period T1 is square root of 365 square into 27. Square root of 365 square is 365. So it is 365 into root of 27. Now whatever that root of 27 comes, you have to calculate using log table, and similarly then you can multiply and find the answer. The second case, if it is twice the distance, what will happen if it is twice the distance? अगर distance हमने डबल किया तो क्या हो जाएगा? Let's try to solve it here. Same procedure you have to follow. आपको वही सारी फिर यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करनी है. क्या कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये रेशो कांस्टेंट है, दैट विल बी इक्वल टू T2 स्क्वायर अपॉन R2 क्यूब. ठीक है, तो
प्रेजेंट ईयर 365 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू न्यू टाइम पीरियड T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अभी R2 कितना है, डबल है, तो यू हैव टू राइट 2R और उसका क्यूब. सो दैट विल गिव यू T2 स्क्वायर, 2 का क्यूब है 8 into R cube. Again your R cube will be cancelled here and you will get the equation T2 square is equal to 365 square into 8. So your T2 in that case will be 365 into root 8. Whatever is the value of root 8 you have to calculate and then from that. So this is the first numerical based on law of periods. Ratio of square of time period to the cube of mean radius is constant for the given planet and the given star. तो ये आपको यहाँ पे यूज करना है. Please calculate these values and check with the values given in the answer in the textbook. Second problem, the gravitational force between two bodies is 1 Newton. दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1 न्यूटन है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने डबल किया, देन व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम. So here are two objects, let us say M1 M2 and having a distance of let us say R between them. You can take any name, R, D, कुछ भी बोलो. तो अभी हमने क्या किया, distance between them is doubled. The masses are same, they are not changed, but we have doubled the distance between them, and then they are asking what will happen to the gravitational force between the two. So this is the visualization of the problem. तो problem इस तरह से visualize किया हमने. Then we can use Newton's law of gravitation, Newton's law of universal gravitation. Newton's universal law of gravitation, and it states that the gravitational force between the two objects is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So for our objects M1 and M2, gravitational force F is equal to capital G, constant of proportionality, product of masses M1 M2 and inversely proportional to the square of the distance between them, so upon R square. This is what is there. Now the new force F dash is equal to capital G M1 M2. M1 M2 के वैल्यू चेंज नहीं हुए, सिर्फ चेंज हुआ है तो ये R चेंज हुआ है, और कि R की जगह वो हो गया है 2R, तो दैट विल बी 2R स्क्वायर लाइक दिस. सो दैट इज इक्वल टू G M1 M2 2 square is 4, 4R square, 4R square. So if we rearrange the term, it is 1 by 4 capital G M1 M2 upon R square. ये G M1 M2 upon R square जो है, this thing, this is our old force. So we can write it as F. जब डिस्टेंस R था तब इतना फोर्स था, तो अब जो हमारा नया फोर्स है अभी F dash, that is 1 by 4 of F. 1 by 4 is 0.25. If you convert it into decimal, तो it is 0.25 F. यानी कि फोर्स 1/4 हो जाएगा. If you double the distance, force will be 1/4. Similarly, if you triple the distance,
तो इनवर्स proportion to the square, force will be 1/9. If you make the distance 4 times, 1/16. But if you make the distance half, it will be 4 times. Correct. तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब डिस्टेंस आप इंक्रीज करोगे तो फोर्स कम हो जाएगा, और डिस्टेंस आप डिक्रीज करोगे तो फोर्स विल इंक्रीज. हियर वी हैव इंक्रीज द डिस्टेंस, तो फोर्स इज डिक्रीज, and by the square term it is decreased.